Assalamu alaikum students. Our today's topic for 12th class is conservation of biodiversity, which we discussed in our last lecture. We discussed about why to conserve biodiversity, and today we will be discussing how to conserve biodiversity. Students, as you know, when we conserve and protect the whole ecosystem, it is biodiversity at all levels is protected. So far as this conservation of biodiversity is concerned, there are two ways to conserve this biodiversity, that is in situ conservation and ex situ conservation. What is in situ conservation? In situ conservation includes biodiversity hotspots, biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuaries, and sacred groves. Ex situ conservation: zoological park, botanical garden, seed banks, embryo preservation, carrier preservation, इसमें liquid nitrogen का इस्तेमाल होता है. In situ means when the entire forest, we save the entire forest to save the tiger. For example, टाइगर को बचाने के लिए हमें तमाम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. दिस अप्रोच इज इन सिटू फॉरेस्ट, दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन. जहाँ पे जानवर रहता है, टाइगर रहता है, उसी जगह को कंजर्व, उसी जगह पे उसको कंजर्व किया जाता है. और कभी कभार वहाँ पे सिचुएशंस होती है व्हेन देयर आर सिचुएशंस व्हेन एन एनिमल और प्लांट इज endangered or threatened. That is, organism facing a very high risk of extinction in the wild in the near future and needs urgent measures to save it from extinction. तो उस सूरत में हम उस एनिमल या उस प्लांट को वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. ऑफ साइट, यानी कि जो उसका एक्चुअल हैबिटेट था उससे निकाल के उसको किसी और जगह पे हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. इन सिटू मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करें, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. इसी तरह से अगर हम किसी एनिमल को जो वाइल्ड में रहता हो और उसको खतरा हो एक्सटेंशन का, तो उसको के लिए हम जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं और वहाँ पे उसको डालते हैं. इसी तरह अगर किसी प्लांट को थ्रेट है एक्सटेंशन की, तो उसके लिए हम बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, उसको वहाँ से उठा के बॉटनिकल गार्डन में डालकर वहाँ पे उसको प्रिजर्व कहते हैं. या सीड बैंक में है, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन है. इन सिटू कंजर्वेशन है क्या? इन सिटू कंजर्वेशन as per your book, faced with the conflict between the development and conservation. Conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Many nations, they were unable to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. यानी कि नेशंस के पास कंजर्वेशन के लिए रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं हैं. इसलिए ऑन द ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots. उन्होंने आइडेंटिफाई क्या किया? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? These are the regions with high levels of species richness and high degree of endemism. Endemism क्या है? That is, species confined to that region and not found anywhere else.
कंजर्वेशनिस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए. These biodiversity hotspots were the regions with high levels of species richness and high degree of endemism. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, लेकिन आगे आगे क्या हुआ, उसमें 9 और ऐड हो गए और टोटल कितने बन गए, 34. कितने बने, 34. These occupy less than 2% area of the world. 2% area of the world they occupy. There are 3 of these hotspots are in India. What are these? Western Ghats and Sri Lanka. इसी तरह से इंडो बर्मा region and Himalayas. They cover our country's exceptionally high biodiversity regions. Although मैंने आपको बताया कि biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. Strict strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reservoirs. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसमें 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन एंड कोर. लोग जो हैं ट्रांजिशन जोन के अंदर जा सकते हैं, बफर जोन के अंदर, ट्रांजिशन जोन में रह सकते हैं, बफर जोन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोर के अंदर नहीं जा सकते. लेकिन जहाँ तक नेशनल पार्क का ताल्लुक है, उसमें आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं. हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का नंबर जो है 14 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हमारे इंडिया में है. देयर आर 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इंडिया के अंदर ये सैक्रेड ग्रोव्स. तीसरा है, इंडिया के अंदर इट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं इंडिया में where the tracts of forests were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. उनकी पूजा की, हिंदुस्तान के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट्स के कुछ हिस्से को पूजा की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है. वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है. तो ऐसे एरियाज़ को हम सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं. इनसे भी बायोडाइवर्सिटी बच सकती है, और गवर्नमेंट जो है ये अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को ये करने के लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बच सके. ये सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं, दे आर फाउंड इन इंडिया इन खासी एंड जैंतिया hills in Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the sacred groves are the last refugees for a large number of rare and threatened plants. This is all about this in situ कंजर्वेशन. एक्सिटिव कंजर्वेशन में क्या है, इस अप्रोच में थ्रेटनेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. फॉर एग्जांपल, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ
सफारी पार्क्स हैं, दीज सर्व दिस पर्पज़। क्या है एक्सिटिव कंजर्वेशन? इस अप्रोच के ज़रिए थ्रेटनेड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं दे आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स में, जैसे कि zoological पार्क्स में, बॉटनिकल गार्डन में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in the zoological parks. बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो एक्सटेंट, दे हैव बिकम एक्सटेंट, वाइल्ड में वो एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी भी मेंटेन किया जा रहा है इन द zoological parks. In recent years अगर आप देखें, एक्सिटिव कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज इन इनक्लोजर्स। अब एडवांसमेंट इसमें हो गई है। नाउ द गैमीट्स of threatened species can be preserved in viable and fertile conditions for long periods using cryopreservation technique. Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture methods. Seeds of different genetic strands of commercially important plants can be kept for long periods in seed banks. This is the advancement in the ex-situ conservation. यानी पहले क्या करते थे, एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स और बॉटनिकल गार्डन्स हुआ करते थे। रिसेंट ईयर्स में ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन एडवांसमेंट हुई है। बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज इन इनक्लोजर्स, नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक्स। इसी तरह से एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। ये हम सब जानते हैं। Seeds of different genetic variations of commercially important plants can be kept for long periods in seed banks. This is ex-situ conservation. Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all the nations. It is a collective responsibility of all nations to conserve biodiversity. The historic convention on biological diversity, that is the Earth Summit, which was held in Rio de Janeiro in 1992, they called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. उसके फॉलो अप में यानी कि 10 साल बाद 1992 के बाद 10 साल बाद 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। यानी कि 2 समिट हुए हैं। एक तो अर्थ समिट हुआ है जो हेल्ड हुआ था इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। वो किस पे हुआ था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ था इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में इन 2002 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप याद रखेंगे। ये डेट्स हो सकता है एग्जामिनेशन में ये डेट्स आ सकते हैं कि वर्ल्ड समिट कब हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ। पहले अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ था इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इन 2002 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। 2 तरीके हैं, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में ऑर्गेनिज्म को अपने ही नेचुरल हैबिटेट में हमने कंजर्व करना है, और एक्स सिटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो थ्रेटन हो गया हो, खतरा हो ख़त्म होने में, उसको हम वहाँ से उठा के किसी नए माहौल में प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, या आजकल नए टेक्निक्स आए हैं जिसमें सीड बैंक्स हैं, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन है, क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक के ज़रिए से
या प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। ये अब नए टेक्निक्स आए हैं, एक्सटीट्यू है। एक्सटीट्यू मीन्स जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी दूसरी जगह पे प्रिजर्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।